Start हो गया? Okay, good morning, friends. So, we'll be starting with our geography classes. So, okay, any type of such queries, Apurva and others, please ask after the class. That would be more suitable. Uh, since you have just asked, I'll just very quickly answer. This program is a altogether foundation course where we will be dealing with the basic as well as advanced. 500 plus program is more about the advanced course. It is more of a type of crash course where I deal with the geography syllabus with 500 plus questions. Okay, so that is the difference between 500 plus and this course. Okay, so we are in basically the month of January, and I just want to ask you, how many of you are going to appear for 2024 prelims? Okay, so some of you are targeting the 2024 prelims. Obviously, from the perspective of 2024 prelims, little bit we are late if you are joining now, because you can understand कि ideally क्या होना चाहिए, at least 50 to 60% of the optional should be finished by January. And if we are starting now, you can understand that it will be difficult. But still, in the next 2.5 months, what we are going to try, we are going to try to make sure that we finish physical geography, which is almost, in number terms, it is 35% of the syllabus. But if you look into how much time does it takes to prepare it, it almost takes around 40%, even 50%, 40 to 50% of the time of preparation actually goes in physical geography. So if we are able to do this, that means around your 40% of your syllabus you can be thorough with. Okay? These classes are very, very suitable for the people who are going to appear for 2025, because you can understand कि if you are joining now, this means that almost till the next prelims there are 18 months left. And can you imagine if you can finish your optionals in the next 6-7 months? That means you have got a huge amount of time to do at least 3 revisions and reach to that level of consolidation which most of the students who will be writing the exam in 2025 will be missing. You know that 2025 के attempt के लिए, I know that majority of them will come in June, and some of them, almost 30% of them, will also come in the month of September, October. This is how the UPSC cycle works in terms of number of students who are coming. जो जून में आ रहे हैं, again they will be finishing their course in December, optional course in December, and you know कि January आते ही what happens with respect to prelims? Band बज जाता है. The pressure is very high, and as a result of which this would be missing. And the only major time that you will get for revision and consolidation will be between prelims and mains after that. And again you can understand जो लोग सितंबर अक्टूबर में आएंगे उनके लिए थोड़ा और डिफिकल्ट होगा, because they will be able to finish their syllabus by February of 2025. So they will not get any time for revision.
So for the 2025 students, it is pretty much clear that this is the very optimum time to join the classes. Optional is something which is a very fundamental to the success in UPSC examination. If you are not getting 270 plus marks in the optionals, this is the minimum target that we have to make. So if we are not getting this much marks, then again there will be problems in the selection. ठीक है, तो हमें कम से कम इतने मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है, so that is basically the case of if you talk about the timeline that you have to keep in mind. Okay, now starting with geography as an optional, how many of you have attended the preparatory classes? किया है? अभी preparatory classes हुई थी, ठीक है, होपफुली किया होगा तुम लोगों ने. तो उसमें we have already talked about what is geography and what is not. So those of you who haven't attempted those classes, they are still there on YouTube. They are also there in the app. ठीक है, so वो app से ज़रूर देखना, because you can understand that well begin is almost half done. So there we have talked about the nature of preparation. We have talked about what is geography, how it needs to be prepared, little bit answer writing in geography, how to incorporate other things like current affairs, etc. All those things we have discussed there. Okay, so here, without wasting any time, now I am going to start with the physical geography, because our target is to finish it as soon as we can. As many of you have told that you will be appearing for 2024. So if you talk about the physical geography, तो सबसे पहले देखते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी. So who is going to answer? What is physical geography? बताओ यार. Okay, geography, everything we study in geography is in spatial sense. Here we are talking about what is specific. You know that geography has primarily two branches, physical and human geography. Okay. In fact, just for the purpose of revision, if I say that what are the important fundamental elements of geography, one important fundamental element of geography is what we call it as environmental studies, where we are essentially doing what? We are studying the environment, and this study is essentially referred to as the physical geography. So here we are talking about what is core of geography. So one important core of geography, if you talk about, is study of the environment. Then second important core of geography, अगर हम बात करें तो क्या है? It is human and environment relationship. ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप. ठीक है, आज की डेट में जब ये एनवायरनमेंट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ज्योग्राफी के अंदर हम इस एनवायरनमेंट को थोड़ा ब्रॉडली लेते हैं. ठीक है, so this environment, if you look into, can be physical environment, but this environment can also be the social environment. ठीक है, so how humans are interacting with their physical environment, that is also we are studying. Particularly आज की डेट में अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि कैन आई से कि हमारा इंटरैक्शन आज के टाइम में एनवायरनमेंट से कम हो गया, एंड आवर इंटरैक्शन इज मोर विद द सोसाइटी एंड कल्चर. इट वाज देयर इन द पास्ट एज वेल,
but now it has further increased. So when we are talking about environment, we are looking into not only the physical environment but also the socio-cultural environment. Okay, so how humans interact with their environment, this relationship, and this is what we call it as human geography. Okay, study of this interaction is essentially human geography. Then if you talk about, there are others as well, important dimensions of geography. One important dimension of geography is that geography is study of geographical space. It is essentially study of geographical space. Okay, so how things are distributed over geographical space, that is the primary purpose of geographical studies. Okay, and if you talk about, from this comes another important dimension of geography, that is the regional geography. ठीक है, रीजनल ज्योग्राफी. तो ये चार मेन डायमेंशंस हैं या कोर ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज हैं जो हमें हमेशा याद रखना है. और इसमें से एक डायमेंशन जो है अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एसेंशियली द फिजिकल ज्योग्राफी. ठीक है, ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूं तो ज्योग्राफी इज अबाउट स्टडी ऑफ व्हाट, it is about study of this geographical pentagon. And definitely this geographical pentagon is consisting of the lithosphere, it consists of the atmosphere, it consists of the hydrosphere, and it consists of the biosphere. तो ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट है इसके चार एलिमेंट्स हैं. ठीक है, देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ दिस फिजिकल एनवायरनमेंट एंड दीज आर दीज 4 एलिमेंट्स: लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. यू कैन अंडरस्टैंड कि फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी, फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लीफिकेशन, वी कैन स्टडी लिथोस्फीयर सेपरेटली, देख सकते हैं उसको, एटमॉस्फेयर सेपरेटली, हाइड्रोस्फीयर सेपरेटली, बायोस्फीयर सेपरेटली. बट कैन आई से कि रियल वर्ल्ड में दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिथोस्फीयर की बात करूं तो कहीं पर अगर सपोज मुझे एटमॉस्फेयर के बारे में जानना है, कैन आई से आई कैनॉट लुक इन टू द एटमॉस्फेयर विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लिथोस्फीयर. फॉर एग्जाम्पल, किसी प्लेस की हाइट, डज इट डिटरमाइंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ दैट प्लेस? यस और नो? अभी मैं रिसेंटली बैंगलोर गया था एंड यू कैन अंडरस्टैंड देयर थ्रू आउट द ईयर द टेम्परेचर इज वेरी प्लेजेंट. इट इज कूल टाइप ऑफ टेम्परेचर एंड इट इज फॉर थ्रू आउट द ईयर. So why it is so? Because Bangalore, if you talk about, is located in Karnataka plateau, which is essentially located at higher elevation. And as we go higher up in the atmosphere, हम बाद में देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, there is application of a phenomena referred to as lapse rate. And because of that, what happens? Temperature declines. ठीक है, तो अगेन वहाँ पर हम किसी जगह के टेम्परेचर को समझ नहीं सकते जब तक वहाँ पर हम लिथोस्फीयर की कंडीशंस को ना समझें. ठीक है, सेम थिंक अबाउट, अगर सपोज करो कि कहीं पर ट्रीज हैं, if there are trees somewhere or forest somewhere, does it means or is it possible that that place may receive more precipitation? Yes or no? वो भी छोड़ो, precipitation को छोड़ो, क्या हमने इसको पर्सनली फील किया है कि अगर मैं धूप में जा रहा हूं एंड इफ आई सडनली फाइंड अ ट्री एंड आई एम फीलिंग द हीट, इफ आई स्टैंड बीनीथ द ट्री, विल आई फील लिटिल बिट कूलर? Obviously yes. तो क्यों ऐसा होता है? Because trees create their own microclimate. You know, trees जो plants होते हैं, बाद में बायोजियोग्राफी में देखेंगे, plants they are able to
cool themselves down. ठीक है, they have a mechanism to regulate their temperature, high temperatures particularly. ठीक है, and you can understand that this phenomena is referred to as transpiration. सुना है transpiration के बारे में? It is a form of evaporation which is done by the plants. So because of that, they have a cooling, they can cool themselves down. So they create their own microclimate. And अगर बहुत सारे पेड़ एक जगह पर हों, so can I say that microclimate will be added up and that area will experience a more moderate form of climate, moderate forms of temperature. So again, you cannot look into the atmosphere without looking into the biosphere. All of these, what I am just trying to say is that they are interconnected to each other. ठीक है, they are all interconnected to each other, and we will see that this interconnection is the thing which we study in ecology and environment. तो हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के सिलेबस में 5 टॉपिक्स हैं. When we are studying lithosphere, study of that is referred to as geomorphology. When we are studying atmosphere, study of that is referred to as climatology. When we are studying hydrosphere, that is referred to as, here we are calling it as oceanography, because we are not studying the entire hydrosphere. We are mainly concerned with one part of the hydrosphere, the largest part, that is the oceans, and definitely the biosphere, which is biogeography. Interaction among all these elements, it is referred to as the study of environment or ecology and environment. ठीक है, so this is one aspect of geographical studies. But very important thing is that कि how many of you have heard about Charles Darwin? सुना है सबने? तो डार्विन ने एक थ्योरी दी कि this theory was the theory of evolution of species. So what Darwin said, that species have essentially evolved, and how we evolve, we react to or we respond to the environmental changes. ठीक है, so as the environment changes, ultimately what happens, we respond and we evolve. So over successive generations, what will happen, there will be evolution of species which will be taking place. ठीक है, जब डार्विन अपनी ये थ्योरी दे रहा था तो उसमें उसने ग्रेव मिस्टेक की. ठीक है, व्हाट वाज दिस ग्रेव मिस्टेक? हिज थ्योरी वाज इनकम्प्लीट. एंड व्हाई हिज थ्योरी वाज इनकम्प्लीट? ही वाज एसेंशियली टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन द स्पीशीज. And what he forget to tell about was that since the time species have evolved, what they have done, they have modified the environment in which they were also living. So not only environment is affecting the species, but species are also affecting the environment. ठीक है, सबसे पहला जो स्पीशीज था, जो हमें जो साइंस बताता है, इट वॉज द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज. ठीक है, तो इफ यू टॉक अबाउट द प्रोकैरियोट बैक्टीरियाज, दे आर बैक्टीरियाज विच लिव इन एनारोबिक कंडीशन. एनारोबिक कंडीशन का मतलब होता है ऑक्सीजन लेस कंडीशन. ठीक है, they were living in water bodies of the world. ठीक है, what essentially happened, these prokaryote bacteria, they also emit oxygen. ठीक है, now when they started to emit oxygen, they made the water bodies so much rich in oxygen that they themselves couldn't survive. So they transformed the water bodies of the world. ठीक है, and thus what happened, survival meant that they had to essentially evolve as well. So the prokaryote bacteria, they converted or they evolved into the eukaryote bacteria. And eukaryote bacteria were the ones which could survive in the oxygen-rich environment. It is from these eukaryote bacteria that all the present living forms have essentially evolved. ठीक है, कैन यू अंडरस्टैंड, एक छोटा सा बैक्टीरिया
इतने बड़े चेंजेस कर सकता है एनवायरनमेंट? डज इट मीन्स दैट थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ लाइफ various species would have done this changes? And if we look in the on the this relationship now, can we say one of the supreme species which has evolved, it is essentially the humans? ठीक है, it is essentially the human beings. And can we say कि जो काम वो बैक्टीरियाज करते थे वो हम भी कर रहे हैं? Aren't we doing the same thing? Tell me. We are also doing the same thing. We are also modifying the environment. In fact, you can understand the rate of change or modification of the environment during the human beings era has become very, very extensive. It has become so much extensive कि scientists आज की डेट में जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करते हैं तो दे आर नाउ टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट इपोक, अ न्यू इपोक which has started with the development of human technologies. Like for example, some say it started with agricultural revolution, and they call this epoch as the Anthropocene. ठीक है? So clearly geography would be incomplete if we don't take into account the Anthroposphere. So we are essentially surviving on what? On these pillars of the environment. ठीक है? So this is what we call it as the geographical pentagon. ठीक है? And this is essentially the scope of geography. Within this anthroposphere, you can understand, can I say कि anthroposphere के भी बहुत सारे components हैं. Human sphere के बहुत सारे components हैं. इकोनॉमिक कंपोनेंट हो सकता है, पॉलिटिकल कंपोनेंट हो सकता है, सोशल कंपोनेंट हो सकता है. ठीक है? सो वेराइटी ऑफ कंपोनेंट्स आर देयर. डेमोग्राफिक कंपोनेंट हो सकता है, सेटलमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट्स. ठीक है? ऑल ऑफ दीज आर डूइंग व्हाट? दे आर इंटरैक्टिंग विथ द पिलर्स ऑफ एनवायरनमेंट और द पिलर्स ऑफ लाइफ. ठीक है? सो दिस इज व्हाट इज एसेंशियली द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी इज. ठीक है? तो फिर से आते हैं अपने वापस उस क्वेश्चन पर इस डिस्कशन के बाद. कैन यू नाउ टेल मी व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी? Can we say physical geography refers to, if you want to write, you can even write, physical geography is a branch of geography. Is a branch of geography which focuses upon study of environmental elements, like the lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere, as well as the interaction among these environmental elements. From these environmental elements from spatial perspective. From spatial perspective. ठीक है? तो स्पेशल पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है? ज्योग्राफर का काम क्या है? हमें बहुत ज़्यादा इससे कोई मतलब नहीं है कि अल्टीमेटली साइक्लोन का अल्टीमेट मैकेनिज्म क्या है. वी आर कंसर्न लिटिल बिट, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. बट हमेशा याद रखना है कि ज्योग्राफी इज लाइक ज्योग्राफर इज लाइक अ सुपरमैन. सुपरमैन क्या करता है? उड़ता है हवा में, और उड़ करके वो क्या करता है? मैपिंग करता है पूरे वर्ल्ड की. ठीक है? तो ज्योग्राफर्स भी क्या करते हैं?
they look at the phenomena from above, they map the phenomena, they try to understand why a particular phenomena is located at a particular space. ठीक है, that is the prime scope of, that is the main scope of geography. Because otherwise, tell me, can I say कि जो हम यहाँ पर ये बातें कर रहे थे अभी कि लिथोस्फीयर, कैन आई से कि जितनी नॉलेज मुझे जियोमॉर्फोलॉजी, मैं एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, तो जितनी नॉलेज मुझे जियोमॉर्फोलॉजी की होगी, कैन आई से हो सकता है कि, हो नहीं सकता, इनफैक्ट होगा कि देयर आर जियोलॉजिस्ट हु नो मोर देन मी अबाउट द लिथोस्फीयर, yes or no? Similarly, the amount of climatology I understand, can I say when I come in front of a meteorologist, मेरी बोलती बंद हो जाएगी. Same thing when happens with the study of hydrosphere, I can come across a hydrologist who would have much better knowledge than me. Same thing if you talk about biogeography, I can come across, if you talk about a biologist who will have much better knowledge than me. So we are not very much concerned about the details. Details हमने छोड़ दिया है, ठीक है, बाकी लोगों को करने के लिए. हम क्या करते हैं, हम सारा चीजों को कंबाइन करते हैं. वी स्टडी इट फ्रॉम 2-3 पर्सपेक्टिव्स. वन इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव क्या है, हम चीजों को स्पेस में देखते हैं, हाउ थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस. एंड वी ऑल्सो ट्राई टू स्टडी हाउ रीजनल ज्योग्राफी, मैंने यहां पर लिखा था, यहां पर रीजनल ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू फोकस अपॉन द इंटीग्रेशन. ठीक है, हाउ दीज एलिमेंट्स आर इंटीग्रेटेड टू ईच अदर. ठीक है, बिकॉज रियलिटी में देखो, सिंपल सी बात है कि पहले अगर मैं नॉलेजेस की बात करूं तो पहले कोई सब्जेक्ट्स नहीं होते थे. देयर यूज्ड टू बी नॉलेज, सबको सब कुछ पढ़ना था. ठीक है, so if you go to school you have to study everything. So there not used to be any kind of such kind of knowledges or subjects, sorry, disciplines नहीं होते थे. बट यूरोप में हम बाद में देखेंगे कि रेनेसा का एक पीरियड आता है, एंड आफ्टर दैट देयर वाज सो मच इंफॉर्मेशन व्हिच वाज गैदर्ड with respect to every field. Now it became very difficult for one person to study everything, and thus what it required, it required specialization. और इससे क्या हुआ, जो नॉलेज थी उसको हमने कंपार्टमेंटलाइज कर दिया और उसको हमने टुकड़ों में बांट दिया. ठीक है, एंड दैट मेड बिकेम द सब्जेक्ट्स. ठीक है, बट द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम. Even if we have divided artificially that knowledge into compartments, ठीक है, can I say कि reality तो ऐसा नहीं है. Reality में everything is interrelated to each other. ठीक है, physical world, human world, they are interrelated to each other. You cannot separate. हम उसको separate क्यों कर रहे हैं? Because हमारे दिमाग की जो capacity है, ठीक है, calculations करने की, it is limited. Human mind has a limited capacity to do calculations. You can understand, today we are taking the help of supercomputers which can calculate, which can look into these interrelations at much faster speed than the humans can do. ठीक है, so हमने, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं फिजिकल एनवायरनमेंट को, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, लिविंग एनवायरनमेंट वी आर स्टडिंग इन बायोलॉजी, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ वी आर स्टडिंग इन अदर सोशल साइंसेस. बट कैन आई से कि इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकल एनवायरनमेंट इज नॉट प्लेइंग अ रोल व्हेन इट कम्स टू अ सोशल साइंस. इट इज प्लेइंग अ रोल. सोशल साइंस इन टर्न इज इंटरैक्टिंग विद द फिजिकल एनवायरनमेंट. तो इस इंटरैक्शन को, इस इंटीग्रेशन को, कैन आई से पढ़ने के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए. और ये काम कौन करता है? इट इज डन बाय ज्योग्राफी. ठीक है, so that is our primary task. हम जब चाहे हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ें, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ें, I have seen many of the students do this grave mistake. And what is this grave mistake? They tend to essentially become a kind of specialist. उनको लगता है, बड़ा मजा आने लगता है, because you can understand
ह्यूमन बिहेवियर इज सच दैट कि हमें नॉलेज गेन करने में मजा तो आता है अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो, ठीक है। सो हम क्या करने लगते हैं, वी बिगिन टू स्पेशलाइज। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ज्योग्राफी का काम ये नहीं है, ज्योग्राफर का काम ये नहीं है कि द ज्योग्राफर हैज टू स्पेशलाइज। ज्योग्राफर्स वर्क टास्क इज सिंपल, ही हैज टू अंडरस्टैंड वन थिंग, how things are distributed in space, how these various physical and human phenomena they are distributed in space. That means where they are and why they are there, how they are there, what is the impact of them being located there. ठीक है, these are the things we are more concerned about. Phenomena की understanding, बाकी लोग हमारे वर्कर्स फिजिक्स में काम कर रहे हैं, उधर उधर काम कर रहे हैं, हम उनसे सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। हमारा काम है उस फिनोमेना को स्पेस में एनालाइज करना और फर्दर हायर लेवल पर जाकर के देखना कि ये सारे फिनोमेना एक दूसरे से कैसे इंटीग्रेट होते हैं, ठीक है। सो दैट इज द प्राइमरी टास्क ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। सो व्हेन वी हैव रिटन दिस टर्म स्पेशियल, फ्रॉम स्पेशियल पर्सपेक्टिव इट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो दिस इज व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी। और यहां पर मुझे थोड़ा सा तुम लोगों से एक कह सकते हो कि डिसअपॉइंटमेंट रहता है कि जब मैंने सब कुछ यहां पर लिख दिया, यहां पर बता दिया, व्हाई यू आर अनएबल टू फ्रेम अ डेफिनेशन। मैंने पूछा कि व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी, यू शुड हैव आंसर्ड। क्या मैंने कुछ अलग लिखवाया उस डेफिनेशन में? वो सारी चीजें जो अभी हमने लिखी थी। तुम लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि तुम लोग अपने दिमाग को काम नहीं करने देते। यू पीपल वॉन्ट एवरीथिंग कुक्ड अप, ठीक है। और इस एटीट्यूड के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता, बिकॉज यू कैनॉट रिमेंबर एवरी सेंटेंस। स्कूल टाइम में वो पॉसिबल था, ठीक है, इट वॉज पॉसिबल इन स्कूल टाइम। बट यहां पर जो चीजें हमें पढ़नी है, इट हैज बिकम टू मच वास्ट। कैन यू इमेजिन, जो अभी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, दिस ज्योग्राफी इज स्टडीड इन ऑलमोस्ट 4 to 5 years in the universities. A person who is doing MPhil, you will have more knowledge than that person. So 5 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं, और वो हम इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ पीरियड में टाइम में करेंगे। इतनी सारी चीजें सेंटेंस बाय सेंटेंस तो याद होने वाली नहीं है। What we will be able to remember, we will be able to remember the keywords, and this very clearly means कि sentence formulation की हैबिट मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। ओके, so that is one aspect of the physical geography. Now in general, अगर मैं किसी से भी पूछूं what is geography, ठीक है, so that person will say that essentially if you talk about geography, study of human and environment relationship, सारी बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। so it is study of human and environment relationship. So if geography is study of human and environment relationship, does it means that to understand this human environment relationship, do we need to also understand the environment first and its elements? Then only can I say I will be able to appreciate the human and environment relationship? Yes or no? तो एक तरह से ये स्टेप बाय स्टेप फीचर है। सबसे पहले हम ज्योग्राफी में क्या करते हैं, वी स्टडी द एनवायरनमेंट एंड देन वी बिगिन टू अप्रिशिएट द ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, दैट इज द ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इन फिजिकल ज्योग्राफी, वी आर गोइंग टू स्टडी द एनवायरनमेंट। अब एक दो चीजें मैं थोड़ी सी बताता हूं कुछ चीजों को समझने के लिए, विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग फर्दर। तो इफ यू लुक इनटू द केस ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, हम ज्योग्राफी को कैसे पढ़ते हैं, देयर इज प्रेजेंस ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, बहुत सारी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन,
और उस जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं. देन एज वी कलेक्ट दिस जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, हम उसमें से कुछ काम की जो इंफॉर्मेशन है वो रख लेते हैं, अदर्स इंफॉर्मेशन को व्हाट विल डू, विल डिस्कार्ड. So then comes the stage of processed geographical information. ठीक है. Once it is there, we begin to make sense of this information. Why at a particular place there is this type of temperature? Why at a particular place there is this much precipitation is taking place? Why, for example, at a particular place there is location of industry? Why at a particular place the houses are made in such a fashion? ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखूं, एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं, तो मुझे इंडिया के हर गांव में, ठीक है, इफ आई गो इन ऑल द विलेजेस ऑफ इंडिया, आई विल फाइंड दैट द हाउसेज विल हैव प्रेजेंस ऑफ कोर्टयार्ड, आंगन. ठीक है, सभी जगह पर मिलता है. अब इसका मैं सेंस बनाऊं, तो इसका सेंस ये बनता है that India is essentially a tropical country and thus it experiences summers for longer period of time. ठीक है, temperatures are high for longer period of time. So why that courtyard or angan is there? So that the doors and the windows of the rooms open in the courtyard and there is circulation of air and the rooms can be kept cool. ठीक है. तो अब ये क्या हुआ, I have made a sense of that, and once I have made a sense of that, it becomes a hypothesis. ठीक है, it essentially becomes a hypothesis. Hypothesis is not a theory. Hypothesis is a carefully constructed idea which is yet not verified. ठीक है. Once a hypothesis is verified, it becomes a theory. ठीक है, it essentially becomes a theory. और थ्योरी जब यूनिवर्सली वेरीफाइड हो जाती है, तो it becomes what? It becomes essentially a law. ठीक है. एंड टॉप पर क्या होता है, लॉज. अगर मेरे पास कुछ लॉज हैं, तो कैन आई से कि वो मेरे को दुनिया को देखने का नजरिया प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. सो एट टॉप ऑफ दिस इज अप्रोच. ठीक है. अप्रोच इज एसेंशियली व्हाट? द वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड. इट इज द पर्सपेक्टिव. So this is how essentially we find that geographical knowledge is designed. ठीक है. So physical geography की अगर मैं बात करूं, तो physical geography में we are talking, I am going to talk about the basic approach. ठीक है. So सबसे पहले geography में अगर हम देखें, तो किसी चीज को पढ़ने के लिए, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, we are studying space. ठीक है. We are studying space. So, to study any phenomena, there can be two perspectives in geography or two approaches in geography, and one is what we call it as systematic approach, and if you talk about other is referred to as the regional approach. दोनों में simple difference अगर मैं बताऊं, तो देखो simple सी बात है कि अगर मैं यहां पर बात करूं, तो दीज आर द ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स. ठीक है. दीज आर द एरिया, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 एंड सो ऑन. ठीक है. यू नो दैट देयर इज फिजिकल ज्योग्राफी, देयर इज ह्यूमन ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी में अभी हमने देखा बहुत सारे एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, 4 मेन एलिमेंट्स. सेम थिंग ह्यूमन ज्योग्राफी में देयर कैन बी वेरियस एलिमेंट्स. ठीक है.
So if I am studying the phenomena whereby I take one element and I see how this element is distributed over geographical space, this type of study हम इसको क्या बोलते हैं? Systematic geography. ठीक है? सो यू कैन अंडरस्टैंड, सपोज मैं लिथोस्फीयर की बात कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम अवर जियोमॉर्फोलॉजी. इफ आई एम स्टडिंग हाउ एटमॉस्फेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, देन इट विल बिकम क्लाइमेटोलॉजी. कैन आई से साइंसेस जो होती हैं वो इसी तरह से डिवाइडेड है. वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर प्रोसेसेस. तो ज्योग्राफी को हम प्रोसेस बेस्ड साइंस की तरह भी पढ़ सकते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो वी कॉल इट एज systematic geography. But as we said before, कि although हम इसको segregate करके पढ़ सकते हैं, but in real world, can I say these things cannot be segregated from each other? ठीक है? So we can also study particular areas and we can look into those areas, how each of these combine together to create this area different from other areas. ठीक है? How they are combining together. And when we are doing this, then it becomes what? It becomes regional approach. ठीक है? तो बात समझ में आई? जब हम सिस्टमैटिक अप्रोच की बात कर रहे हैं तो हम साइंटिफिक हैं. और साइंस क्या करता है? What does the science does? देखो एक चीज और बता देता हूं यहां पर. साइंस के बारे में 3 चीजें एकदम याद रखो ज्योग्राफी पढ़ने से पहले. व्हाट इज दिस? साइंस इज एसेंशियली बेस्ड अपॉन यूनिवर्सल लॉज एंड थ्योरीज. यस और नो? साइंस में होता है यूनिवर्सल लॉज एंड थ्योरीज. These universal laws and theories, can we say, can be tested in laboratory. कहीं पर भी उनको टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी टेस्ट कर सकता है. अगर मुझे ग्रेविटी को टेस्ट करना है, कैन आई से कि आई कैन टेस्ट, एनी वन कैन टेस्ट. ठीक है? थर्ड, these laws and theories, they give us ability for prediction and post diction. यानी कि हम पास्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं पोस्ट डिक्शन, एंड वी कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट द फ्यूचर. ठीक है? सो दिस इज अबाउट साइंस. So coming back, when we are talking about systematic, ठीक है, can I say कि इसमें प्राइमरी पर्पस क्या होगा? What will be the primary purpose? Can I say the primary purpose will be to make these universal laws and theories. और universal laws and theories कैसे बनती हैं? by identifying some common patterns. ठीक है? By identifying some common patterns. For example, tell me, if we take the case of tropical rain forest, ठीक है, अगर मैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को लूं, कहां पर मिलते हैं? एनीवन? वेयर डू यू फाइंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? इन जनरल अगर मैं देखूं, स्पेशली देखूं, तो कैन आई से one area where they are found is the Amazonian basin. Yes or no? Another area where we find is Africa, primarily in the Congo basin. Do we find these forests also in Indonesia? And there are other places where you also find these forests. Like for example, parts of Central America, ठीक है, parts of India, if you talk about Guinea coast of Africa.
So several other places also they are found, but these are the three main areas where they are essentially found. अब मैं इन सभी को जाकर के पढ़ूं तो उसमें मुझे बहुत सी कॉमन चीजें निकल के आएंगी. क्या क्या कॉमन चीजें निकल के आएंगी? एक बहुत कॉमन चीज निकल के आएगी कि जनरली 0 से 10 डिग्री के बीच में, लैटिट्यूड के बीच में मिलते हैं. ठीक है, कैन आई से मैंने एक कॉमन पैटर्न बना दिया. डज इट बिकम्स अ लॉ? यस और नो? और भी चीजें समझ में आएंगी मुझे. आई विल फाइंड दैट द एवरेज एनुअल टेम्परेचर्स in these areas will be 27 degrees Celsius. I will find that the change in temperature will be just between 2 to 5 degrees Celsius from summer to winter. That means they will have narrow annual range of temperature. ठीक है, हमें और भी चीजें पता चलेंगी. Like for example, we will find that these places in general will have precipitation over 250 centimeter precipitation मिलेगा हमें. Very important thing that this precipitation will be well distributed throughout the year. Well distributed throughout the year. Despite this well distribution, we will find that there will be some months which will display maxima and there will be some months where there will be minima. ठीक है, there will be 2 maxima months which will coincide with इक्विनॉक्सेस, क्योंकि इक्विनॉक्स पे क्या होता है, सन इज एट द इक्वेटर, तो उस समय ज्यादा गर्मी होगी, ज्यादा बारिश होगी. मिनिमा विल कोइंसाइड विथ, कैन आई से, सोल्स्टाइसिस, बिकॉज इट इज द टाइम पीरियड व्हेन द सन इज फारदेस्ट अवे फ्रॉम इक्वेटर. ठीक है. सिमिलरली आई विल फाइंड कि इन दीज देयर विल बी presence of at least 3 canopy of trees मिलेंगे. First canopy, which is referred to as the emergent canopy. Below that we will be finding that there will be the second layer of trees which we will find. Then further below that there we will be finding that there is a third layer of trees will be found. So there will be 3 layers of trees found. ये 3 layers of trees इतने dense हैं कि on the ground less than 1% sunlight is able to reach, and that is why what we will be finding, there will be absence of grasses. So the only layer which will be found here will be presence of some shrubs, but these shrubs also cannot survive, so they will have to become what? Climbers, एपिफाइट्स. ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये मैं कॉमन चीजें ढूंढ रहा हूं. कैन आई से ये अक्रॉस ये सभी जगह पर मिलेगा. तो जब मैं ये स्टडी कर रहा हूं, व्हाट वी आर फाइंडिंग दैट दिस टाइप ऑफ स्टडी इज सिस्टमैटिक स्टडी. आई होप इट इज क्लियर. सो दैट इज वन थिंग. बट जब ये फॉरेस्ट को एक्चुअली में एक्सप्लोर किया गया, ठीक है, बाय मिड 18th century there were some zoologists who studied these forest areas. Like there was Leclerc, was one of the very famous geologists of that time. When he studied these forests, he found out that Amazon forest and Congo forest, there was not one mammal species which was common, not a single mammal species which was common in them. ठीक है, बट दोनों में कंडीशंस तो सेम मिल रही हैं. बट डिस्पाइट दैट they were very unique, they were very different from each other when it came to species composition. It is something like, think about this, कि दो भाई हैं, एक ही घर में पैदा हुए, ठीक है, लेकिन इज इट पॉसिबल कि उनकी एक्सपीरियंशियल हिस्ट्री अलग अलग हो सकती है? एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैज हैपेंड, दे हैव डेवलप्ड यूनिक कैरेक्टर. ठीक है, सो कैन आई से कि उनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी होंगी
उन दोनों भाइयों में? यस और नो? देयर मे बी सम जेनेटिक सिमिलैरिटीज, देयर मे बी some physical similarities also, but despite that, because their experiential histories were different, can I say they also were having unique character? और ये दोनों बातें सच हैं, सिमिलैरिटीज भी सच हैं और यूनिकनेस भी सच है, ठीक है? So again you can understand that when we are talking about regional geography, what is the focus here in the study of regions? To study the unique characteristics. When we are talking about systematic geography, here we are more concerned about finding the common patterns. Common patterns. I hope it is clear. इतनी बात समझ में आई? अब मुझे ये बताओ कि if we talk about these सिस्टमैटिक में कॉमन पैटर्न्स हम फाइंड कर रहे हैं, यहां पर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है? कौन सी स्टडी में ऐसा दिखेगा कि इट इज मोर लाइक अ साइंस? थिंक अबाउट साइंस एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स. कैन आई से इट विल लुक मोर लाइक अ साइंस इन सिस्टमैटिक ज्योग्राफी? ठीक है, व्हेन वी आर स्टडीइंग इट फ्रॉम सिस्टमैटिक पर्सपेक्टिव, ठीक है? यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाऊं, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में जो फिजिक्स का प्रोफेसर होगा, केमिस्ट्री का प्रोफेसर होगा, उसका स्टेटस कंपैरेटिवली हाई होगा कंपेयर टू द प्रोफेसर्स ऑफ सोशल साइंसेस. द रिसर्च फंड्स विच आर गिवन, they are more given to the natural sciences and less given to the social sciences. So the status of sciences in any of these universities is very much high. So can I say कि social scientists भी they will also feel like कि यार हमें भी वो respect मिलनी चाहिए because we are also studying, ठीक है? Problem is that कि हमारा subject matter इतना complex है, which is human beings and their behavior, that we cannot be like the natural scientists, ठीक है? But they will also always have this feeling कि हमें भी वो status मिलना चाहिए, ठीक है? Can I say कि geography में because there is physical world we are also studying, which type of approach can be said to be more preferable? Can I say systematic? When we are studying human geography, human का behavior बहुत unique है, तो वहां पर थ्योरीज डेवलप करना, लॉस डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है? एक ह्यूमन बीइंग, सेम ह्यूमन बीइंग, ही इज थिंकिंग समथिंग एल्स इन द मॉर्निंग एंड समथिंग एल्स बाय द इवनिंग, ठीक है? हिज मेंटालिटी में वुड हैव टोटली चेंज. सो व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स. दैट मीन्स कि ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर में कैन आई से कि सेम रिजल्ट का रिपीट होना, it is a rare situation. But can I say physical world में the same result will be repeated again and again? Yes or no? It will happen again and again. For example, if a river is flowing, can I say it will always flow from high to low areas? Yes or no? Obviously it will be the case. We will see geomorphology में if two plates are colliding with each other, what will happen? Can we say that the rocks will be deformed and there is possibility of formation of mountains? ठीक है? And it will always happen when the two plates will collide with each other. So in geography, in physical geography, we are focusing on the physical world where the same phenomena will be repeated again and again. And if it is so, can we say that the most appropriate approach to study the physical geography would be, so
to study physical geography can we say is the systematic approach. Yes or no? It is clearly the systematic approach. And this is one of the preferred ways through which physical geography is being studied. And why? Because in physical world, the same results are repeated again and again. As a result, finding common patterns and formulating theories and laws becomes easier. तो इसको लिखने के बाद you write one more sentence. As a result, finding common patterns, as a result, finding common patterns and formulating theories and laws becomes easier. ठीक है? And formulating theories and laws becomes easier. So one of the preferred approach, ठीक है, appropriate के बजाय मैं यहां पर एक और वर्ड यूज कर सकता था, preferred approach. ठीक है, in the study of physical geography has been the systematic approach. क्योंकि जोग्राफर्स हमेशा से एक तरह से सौतेला व्यवहार, not only geographers but all the social sciences have experienced this kind of behavior, and thus they always feel like their citizenship in universities is second grade citizenship. ठीक है, geographers के पास however एक tool है which is not there in other social sciences, that geographers also study the physical world, and through that they can showcase that their subject is also equal to sciences. ठीक है, this is one of the reasons you will find that particularly in the initial days of geography, physical geography was the one which was more emphasized by the geographers. ठीक है, like for example बाद में देखेंगे one of the very important persons of who was involved in development of geography, and if you talk about it, was Bernhard Verenius. So Verenius was very clear that initially what we should do, we should focus upon development of physical geography, and in physical geography it should be developed through systematic approach, because it will give the impression of geography to be a science. ठीक है, human geography should be studied through regional approach, because humans cannot be studied through the systematic methods. ठीक है, so that is the most suitable approach. But even if we say that this is the most suitable approach or most preferred approach, can I say the other is also true? We should not forget that physical geography can be also studied through regional approach, because every area, even in terms of the physical environment, can display certain unique characteristics. ठीक है, तो रीजनल अप्रोच फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ द रीजनल अप्रोच, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज कंबाइन होगी, हमने देखा कि फिजिकल वर्ल्ड में एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, चार चीजें कंबाइन हो रही हैं, तो उसके बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. ठीक है, और इसकी वजह से व्हाट विल हैपन, एवरी टाइम द फिजिकल एनवायरनमेंट विच विल बी क्रिएटेड, इट कैन बी डिफरेंट. ठीक है,
each of these physical worlds, they can have different histories, and thus despite many similarities they will also have what certain unique characteristics मिल सकते हैं. ठीक है, लाइक अभी हमने बात किया रेन फॉरेस्ट का. क्यों ऐसा है कि वो रेन फॉरेस्ट में सारी कंडीशंस एक जैसी हैं, लेकिन उसके बाद भी जो स्पीशीज हैं दे आर फाउंड टू बी डिफरेंट बिकॉज देयर हिस्ट्रीज आर डिफरेंट. ठीक है, वी नो दैट यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट पेंजिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा है. तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, उससे साउथ अमेरिका बहुत पहले अलग हो गया गोंडवाना लैंड से, एंड दस वहां पर जो इवोल्यूशन प्रोसेस हुआ वो डिफरेंट तरीके से हुआ. ठीक है, देयर वाज अ डिफरेंट इवोल्यूशनरी प्रोसेस व्हिच अकर्ड देयर. इन अफ्रीका अ डिफरेंट इवोल्यूशनरी प्रोसेस हैज टेकन प्लेस बिकॉज देयर हिस्ट्रीज विल बी डिफरेंट, thus there will also be certain unique characteristics. So although हम मेजर फोकस फिजिकल ज्योग्राफी में सिस्टमैटिक अप्रोच पर देते हैं, डिस्पाइट दैट द रीजनल अप्रोच ऑल्सो गिव्स अस insights into the physical world, and that is why हमारे पेपर 1 में there is physical geography where we are studying from systematic perspective. ठीक है, but there is also paper 2 where you have to study the physical settings of India, and there we will see that there are several type of unique characteristics which are found. Like for example, अगर हम देखें, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. तो there is Himalayas, you know, and there are Alps mountains. Alps mountains कहाँ पर है? यूरोप में. ठीक है, both of these are young fold mountains. ठीक है, both of these have formed as a result of what? Both of these have formed as a result of continent-continent collision. ठीक है, बट दोनों कोलिजन की हिस्ट्री थोड़ी अलग है. ठीक है, as a result of which the number of ranges which have been formed in each of them are different. हिमालयाज में हमें कितनी रेंजेस मिलती हैं? अगर हम देखें तो सबसे पहले ट्रांस हिमालयाज, फिर उसके बाद टेथिस हिमालयाज, फिर उसके बाद ग्रेट हिमालयाज, देन कम्स द मिडिल हिमालयाज, एंड देन कम्स द शिवालिक. वी फाइंड दैट देयर आर टोटल 5 रेंजेस present in the Himalayas. Himalayas, if you have seen, because of certain unique characteristic, Himalayas ऐसे दिखते हैं. ठीक है, सो यहां पर हमारे जो हम जिनको बोलते हैं हिमालयास. ठीक है, यहां पर पाकिस्तान में पाकिस्तान अफगानिस्तान में देर आर कीर्थर एंड सुलेमान रेंजेस, एंड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया यू नो देर इज पूर्वांचल हिल्स. ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जब पेनिनसुला वॉज कोलाइडिंग विथ एशिया, पेनिनसुला वॉज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, वेयर इधर उसका हार्ड टंग बाहर जा रहा था इन द फॉर्म ऑफ अरावली. हियर देयर वाज अ हार्ड पार्ट इन द फॉर्म ऑफ शिलोंग, एंड बोथ ऑफ देम पेनिट्रेटेड मोर डीपर, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस काइंड ऑफ आर्क शेप्ड हिमालयास विथ दिस सिंटैक्सियल बेंड्स वर फॉर्म्ड. ठीक है, सो दोनों, कैन यू अंडरस्टैंड, एल्प्स भी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन से बने, हिमालयास भी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन से बने, but because of specific differences can we say there is some uniqueness. ठीक है, so do you get my point? So thus although physical geography a preferred approach is what? It is the systematic approach, but it will always be incomplete without the regional approach. ठीक है, I hope it is clear. Okay, so that is one aspect of physical geography. Now in physical geography, if you look into what is the perspective on human environment relationship. ठीक है, because entire geography is study of what? Entire geography is study of human environment relationship. ठीक है, so what is this perspective in physical geography of the human environment relationship? We take this perspective as, in physical geography,
humans are taken as just another species. ठीक है, in physical geography humans are treated as just another species, as just another species. Full stop. In other words, they are also subjected to the same environmental or physical laws as any other species. ठीक है, तो 10 लिखो इसमें, 10 द फोकस ऑफ स्टडी becomes the study of environment. And identifying the environmental laws. ठीक है, तो इसको सिंपल टर्म्स में बोलें तो फिजिकल ज्योग्राफी में विच अप्रोच इज द मोस्ट डोमिनेंट अप्रोच और पर्सपेक्टिव? इट इज डिटर्मिनिस्टिक पर्सपेक्टिव. ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी इज बेस्ड अपॉन डिटर्मिनिज्म फिलॉसफी. इट इज बेस्ड अपॉन द फिलॉसफी ऑफ डिटर्मिनिज्म. ठीक है, सो डिटर्मिनिज्म फिलॉसफी क्या कहती है? ये सिंपली इसका कहना है कि देयर इज एब्सेंस ऑफ free will. We don't have any free will. We are determined by some environmental laws. वो determine कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे. ठीक है, so that means अगर हम बात करें, there is external environment. This external environment determines the humans and their behavior. ठीक है, like it determines the behavior of any other species. ठीक है, and this is the reason in physical geography we do not give space to the human beings. Here essentially it is we study humans as any other species. ठीक है, तो यू कैन वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड कि फिजिकल ज्योग्राफी की ये जो फिलॉसफी थी ये डार्विनिज्म के बाद और स्ट्रांग हो गई. ठीक है, व्हेन देयर वाज इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज वाज बोर्न. सो डार्विन ने एक चीज प्रूव की, एंड व्हाट वाज दैट? डार्विन प्रूव्ड दैट ह्यूमन बीइंग्स आर जस्ट प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस लाइक एनी अदर स्पीशीज. ठीक है, दैट मीन्स वी आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू द सेम लॉज ऑफ एनवायरमेंट. इसका सीधा मतलब है कि अगर हम देखें एक सिंपल सा एनवायरमेंट का लॉ क्या कहता है कि एनी स्पीशी विच इज बोर्न ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बिकम एक्सटिंक्ट. ठीक है, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. तो कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जो इफ यू टॉक अबाउट दे बिकम फुल्ली एक्सटिंक्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मैमथ्स. They became fully extinct. Some of the species ultimately they survive but survive in other form. ठीक है, जिसको बोलते हैं pseudo extinction. तो वो evolve हो गए. But extinction if you talk about is always rule of nature. अगर mammals के context में देखें तो on an average the mammals survive for 5 to 10 million years. ठीक है,
इंडिविजुअल स्पीशीज ऑफ मैमल्स, देयर एक्सटिंक्शन रेट्स वैरी बिटवीन 2 to 5 मिलियन ईयर्स. ठीक है. बाय द सेम लॉजिक कैन वी से देयर विल बी वन डे व्हेन ह्यूमंस विल आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट. ठीक है. सो अगेन इफ यू टॉक अबाउट, we are also subjected to the same laws of nature as any other species. So this is the philosophy on which the physical geography is essentially based. ठीक है. तो अगर हमें पता है कि ये एनवायरनमेंट जो है हमारे बिहेवियर को, हमारी एक्टिविटीज को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर फोकस किस पे होगा? कैन आई से द फोकस विल बी ऑन द स्टडी ऑफ this external environment and its laws. ठीक है. And that is what the physical geography tries to do. It tries to study this environment and its laws. ठीक है. So that is basically the case of physical geography. अगर हम in general देखें physical geography का development, so जैसे किसी भी साइंस का डेवलपमेंट होता है, same way physical geography has also developed. ठीक है. तो फिजिकल ज्योग्राफी में भी अगर हम देखें तो बिफोर द पीरियड ऑफ रेनेसा, लाइक एनी अदर साइंस, इट वाज आल्सो बेस्ड अपॉन सम इरैशनल थॉट्स. कुछ भी उसमें बोल देते थे फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर. ठीक है. सो पर्टिकुलरली अगर हम देखें 17th सेंचुरी तक, यू नो दैट इवन द यूरोपियंस बिलीव्ड दैट सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. ठीक है. So again, it was not based upon rationality. It was not based upon evidence. The scientific method. ठीक है. Only later on, as the scientific method was developed, it was adopted, and physical geography was the one to adopt it first. And with that, what happened? Physical geography began to become more and more rational science. ठीक है. ये rationality 1920s के बाद और ज्यादा बढ़ गई फिजिकल ज्योग्राफी में. ठीक है. क्यों? बिकॉज उस समय ऑब्जेक्टिविटी वॉज वेरी मच एम्फोसाइज्ड. ठीक है. सो बिफोर दैट वी विल सी जो फिजिकल ज्योग्राफी था, स्टिल इन दैट फिजिकल ज्योग्राफी देयर वाज सम थिंग्स, सम टाइप ऑफ स्टडीज विच कुड नॉट बी वेरीफाइड. लाइक हम जियोमॉर्फोलॉजी में देखेंगे डेविस की थ्योरी, साइकिल ऑफ इरोजन की थ्योरी. तो साइकिल ऑफ इरोजन में की थ्योरी में डेविस कहता है कि जो लैंडफॉर्म्स होते हैं दे इवॉल्व थ्रू स्टेजेस ऑफ यूथ, मैच्योर एंड फाइनली दे रीच टू ओल्ड स्टेज. फाइनल स्टेज इज द पेनिप्लेन. ठीक है. तो जो लैंडफॉर्म्स होते हैं सबसे पहले यूथ स्टेज में कुछ इस तरह के होंगे. ठीक है. फिर क्या होगा? इन मैच्योर स्टेज दे विल बिकम लाइक दिस. ठीक है. इन द ओल्ड स्टेज they will become like this. ठीक है. So this is the youth, mature and old. ठीक है. But this transformation of the landforms, it takes millions of years. It occurs in cyclic time which takes millions of years. ठीक है. Now tell me, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कौन जिंदा रहेगा वेरीफाई करने के लिए कि लैंडफॉर्म्स इस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं. ठीक है. सो मेनी थिंग्स कैन बी सेड दैट दे वर जस्ट कुक्ड अप बिकॉज दे कैन नॉट बी वेरीफाइड, एंड साइंस इज स्ट्रिक्टली आइडेंटिफाइज ओनली दोज थिंग्स विच कैन बी ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड. बट दे वर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ साइंस. दिस वॉज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. So initial phases में physical geography was very irrational. Then it began to become more rational. And ultimately what happened? First, if we talk about first half of the 20th century, it became very, very objective type of science. ठीक है. And essentially, so ये objectivity बढ़ गई, particularly if you talk about as we reach to the Second World War. By Second World War, it had become very, very objective. In general, 1970s के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी में एक और चेंज आता है जो ओवरऑल सोसाइटी में चेंज आता है. ठीक है. और ओवरऑल सोसाइटी में यू नो कि
आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वॉज द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नए तरह का कॉलोनिज्म स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक कॉलोनिज्म, ठीक है। और इकोनॉमिक कॉलोनिज्म में जो उससे पहले का कॉलोनिज्म था वो उसमें और इकोनॉमिक कॉलोनिज्म में डिफरेंस है। हाउ इट इज डिफरेंट? पहले वाला कॉलोनिज्म कैसा होता था कि किसी को पकड़ लिया, 2 थप्पड़ मारे और उसके पैसे छीन लिए, तो दैट वाज फर्स्ट टाइप ऑफ कॉलोनिज्म। इकोनॉमिक कॉलोनिज्म इज डिफरेंट, किसी से दोस्ती की और फिर धीरे धीरे उसको बैंकरप्ट किया, दैट इज इकोनॉमिक कॉलोनिज्म, ठीक है। So in this era it was very important that ultimately that the countries become part and parcel or they become friends, they start trading with each other, ठीक है, then only it could be accomplished। और उसके लिए what was very important, it was very important to show them that ultimately they will benefit from such association, there will be development। So many forms of concepts of development essentially evolved, ठीक है। ओवरऑल इफ यू टॉक अबाउट द बेसिक थिंग वाज दैट इस डेवलपमेंट का एक अगर हम देखें आउटकम था इन द नॉलेजेस, एंड व्हाट वाज दिस आउटकम, दैट इट वाज नाउ बिलीव दैट एनी स्टडी यूज विच यू डू, ठीक है, एनी नॉलेज इट शुड हैव सम काइंड ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल यूटिलिटी का आइडिया इवॉल्व होना शुरू हुआ कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। बाय 1970s इन एकेडमिक्स इट वाज वेरी मच यूटिलाइज्ड, ठीक है। एंड दिस इफ यू टॉक अबाउट मूवमेंट इन द साइंसेज इट इज रेफर्ड टू एज अप्लाइड डेवलपमेंट ऑफ द अप्लाइड साइंसेज। तो फिजिकल ज्योग्राफी में भी हमें सेम फिनोमेना दिखाई पड़ता है, बिकॉज फिजिकल ज्योग्राफी वाज नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम एकेडमिक्स। So if other branches, if you talk about branches of science, they are being affected, physical geography will also be affected. And we find that 1970s में physical geography के अंदर हमें दिखाई पड़ता है कि there was development of applied branch of physical geography. So there was applied branch of geomorphology, applied branch of climatology, applied branches of oceanography. All of these applied branches essentially developed in physical geography. ठीक है। एक और चेंज हमें दिखाई पड़ता है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, ये अप्लाइड का ही पार्ट है। और ये चेंज क्या है कि 1940s में, 40s 50s में वी वर द पीपल हु फर्स्ट रीच्ड इन स्पेस, ह्यूमंस फर्स्ट वर दे रीच्ड इन स्पेस एंड दे सॉ अर्थ फ्रॉम अबव, ठीक है। एज यू सी अर्थ फ्रॉम अबव, कैन आई से our planet is a very beautiful planet. It is famously referred to as the blue planet. ठीक है? No other planet looks like the Earth. But you know what we have been doing? We have been destroying the environment at a very fast rate. So various pictures taken from space emerged, which showed how Earth was beautiful, but which also showed that how Earth was being degraded. And as a result of which, there was an idea which emerged. इस idea को हम बोलते हैं environmentalism idea. And what was this environmentalism idea? That the Earth needs to be protected from the harmful effects of the human beings. ठीक है? So ultimately we realize that humans have become what? Humans have become a very important agent of change in the environment, ठीक है। And thus this idea also penetrated in, or it also made its way in the study of physical geography. Thus in physical geography today, if you talk about, humans are taken as an important agent of change, ठीक है। So what I am just talking about is something like this. If I look into 17th, 18th century, ठीक है, physical geography was based upon what? It was based upon non-rational thoughts, ठीक है।
After this began to take place, what? It became more rational. Despite this rationality, there was still what? Despite this rationality, there was still scope for subjectivity. ठीक है? There was still scope for subjectivity. It was only later on, if you talk about in the 20th century, what happened? We find that it became very rational plus very objective science. ठीक है? एंड ये 20th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ, ठीक है? देन बाय 1970s, if you talk about, there is also emergence of applied physical geography. ठीक है? और जैसा कि मैंने बोला, अप्लाइड फिजिकल ज्योग्राफी के दो एस्पेक्ट्स हैं, दो चीजें फोकस करते हैं हम अप्लाइड फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ने में. हाउ फिजिकल ज्योग्राफी नॉलेज कैन बी यूज्ड फॉर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी. ठीक है? तो इसका वन पार्ट क्या है? हाउ द नॉलेज of physical geography can be used for benefit of society. And if you talk about the second, understanding the role of humans, understanding the role of humans as an agent of change. Understanding the role of humans as an agent of change in environment. ठीक है? सो ब्रॉडली हम अप्लाइड फिजिकल ज्योग्राफी में ये दो थीम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है? तो अब पूरे सिलेबस को हमें इसी पर्सपेक्टिव से देखना. हम देखेंगे सभी में द सेम थिंग हैज टेकन प्लेस. नाउ द पाइनियर, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी के भी यू कैन अंडरस्टैंड दैट देयर आर 5 ब्रांचेस विच वी आर सीइंग हियर, सब ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी: जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी एंड एनवायरमेंट ज्योग्राफी. ठीक है? द पाइनियर अमंग दीज हैज बीन ऑलवेज जियोमॉर्फोलॉजी. ठीक है? So geomorphology, if you talk about, has been the pioneer sub branch of physical geography. Geomorphology has been the pioneer sub branch of physical geography. ठीक है? तो सबसे जो डोमिनेंट पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी रहा है थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इट हैज बीन जियोमॉर्फोलॉजी. एंड जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, इफ यू टॉक अबाउट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हैव हैड वेरी हाई स्टेटस इन नॉट ओनली फिजिकल ज्योग्राफी बट यू कैन अंडरस्टैंड इन एंटायर ज्योग्राफी. ऑब्वियसली अगर मैं पूरे ज्योग्राफी में देखूं तो कैन आई से कि फिजिकल ज्योग्राफी सीम्स टू बी मोर साइंटिफिक. तो अगर वो मोर साइंटिफिक है तो उसका स्टेटस ह्यूमन ज्योग्राफी से ऊपर हो जाएगा. वैसे ही, और उसके अंदर भी जियोमॉर्फोलॉजी इज द वन विच डोमिनेट्स मोर. एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट विल हैपन, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट का स्टेटस ज्योग्राफी के अंदर इट इज वेरी वेरी हाई. ठीक है? इट हैज बीन ट्रेडिशनली like this, although in recent times human geographers have become more dominant.
ठीक है, विद इन ज्योग्राफी, बट स्टिल जियोमॉर्फोलॉजिस्ट आर द वंस विच हैव ऑलवेज टेकन द लीड. ठीक है, so that is basically in general about physical geography, and as I told you, our study will start with the first one, that is the geomorphology. In the first class which I had taken, I had explained कि physical geography में grave errors students क्या करते हैं, जो मैंने अभी बात बोली, ठीक है, कि जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैज बेटर स्टेटस एटसेट्रा एटसेट्रा. तो यहाँ पर यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स आते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के, वो भी अपने आप को ज्योग्राफर समझने लगते हैं. दे ऑल्सो फील कि जियोमॉर्फोलॉजी में ज़्यादा टाइम देने से हमें ज़्यादा बेटर स्टेटस मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. जियोमॉर्फोलॉजी कंज्यूम्स योर लॉट्स ऑफ टाइम, बट द आउटपुट दैट इज देयर, इट इज क्वाइट लो. There is greater output in climatology, there is greater output in oceanography, there is greater output if you talk about in biogeography, environment geography. So I really believe that you should give equal amount of time to each of the three. ठीक है, naturally geomorphology थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, but others should also be given significance. But because we are starting physical geography, so it will be starting with the case of geomorphology. So again here coming back to the same question, what is geomorphology? So what is geomorphology? ठीक है, he is saying that it is study of landscape or landforms. ठीक है, so we can simply say that geomorphology, it is study of landforms. ठीक है, it is essentially study of landforms. अब इसमें देख सकते हो कि एक टर्म क्या है यहां पर, जियो. ठीक है, दूसरा टर्म है मॉर्फो. ठीक है, एंड थर्ड टर्म इफ यू टॉक अबाउट इज लॉजी. ठीक है, तो जियो यहां पर क्या हुआ, अर्थ, बट हमारे ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से यहां पर जियो का मतलब क्या हुआ, अर्थ सरफेस. ठीक है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी, जियो एसेंशियली मीन्स अर्थ सरफेस. मॉर्फो का मतलब क्या होता है, शेप. ठीक है, शेप या जो यहां पर हमने लिखा है फॉर्म. ठीक है, and logy is basically what, it is study or science. ठीक है, so what is essentially geomorphology, it is science or study of landforms. तो अर्थ सरफेस यहां पर क्या हो गया, ठीक है. So this is what we essentially mean by the landforms. I hope it is clear. तो अब क्वेश्चन आता है, from this we can move on and try to understand what are landforms. What are landforms? तो landforms क्या होते हैं, we can simply say landforms are the features. लिख लो इसको, landforms are the features
of the earth's surface which can display various forms. ठीक है, so that is basically what we mean by landforms. Full stop. They can be found at variety of scales. They can be found at variety of scales. Scale क्या होता है? साइज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत सारे शेप्स एंड साइजेस के हो सकते हैं, हम कहने का मतलब है. तो दे कैन बी फाउंड एट वैरायटी ऑफ स्केल. अगर हम ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी में देखें तो जियोमॉर्फोलॉजी में लैंडफॉर्म्स कैन बी फाउंड एट सेवरल स्पेशियल स्केल्स. स्पेस के टर्म्स में, साइज के टर्म्स में उनके बहुत सारे स्केल्स हो सकते हैं, ठीक है. तो लैंडफॉर्म्स कैन बी ऑफ 5 स्केल्स. लैंडफॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है. फर्स्ट is referred to as the first order landforms. फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स, ठीक है. फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म को मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स कौन से होंगे? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स. व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स. ठीक है. देन देर विल बी सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स. सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स हो सकते हैं. तो सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स. First order landforms are further subdivided into second order landforms. ठीक है. तो अब मैं इसके एग्जाम्पल दूं, तो सपोज हम एक कॉन्टिनेंट लेते हैं, ठीक है. So if I take North America, so this is a first order landform हो गया ये, ठीक है. नाउ कैन आई डिवाइड दिस कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इनटू रॉकी सिस्टम, ठीक है. देयर इज, हियर इज द कैनेडियन शील्ड, ठीक है. देयर इज, here is the Appalachian system, and this is the Great Plains, the Great Plains of North America. तो ये जो हमने एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए, ये कौन से हो गए? सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स बन गए. तो यहां पर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्लेन्स, प्लाटू, माउंटेन्स. दिस बिकम्स द सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. ऑब्वियसली बिलो दिस देर इज सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स आर मेड अप ऑफ थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स. ठीक है. तो अगर मैं थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स का एग्जांपल दूं, तो टेल मी नाउ
कि अगर मैं रॉकीज की बात करूं तो कैन वी आइडेंटिफाई दैट हियर अलोंग दीज रॉकीज, सबसे पहले यहां पर हमें एक मिलता है कोस्ट रेंज, ठीक है, कोस्ट रेंज। इसके अलावा व्हाट वी फाइंड, देयर इज दिस वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, देयर इज दिस ईस्टर्न कॉर्डिलेरा, ठीक है। इन बिटवीन यहां पर देयर आर प्लाटूज ऑल्सो, लाइक कोलंबिया प्लाटू, कोलोराडो प्लाटू, ठीक है। रॉकीज देखा है, नॉर्थ में नैरो है, साउथ में नैरो हो जाते हैं, बीच में वाइड हो जाते हैं। वाई? बिकॉज देयर आर इंटर माउंटेन प्लाटूज इन बिटवीन देम। So there is Columbia Plateau, there is Colorado Plateau, which are sandwiched between these ranges. तो जब मैं एक माउंटेन सिस्टम को ले रहा हूं, ठीक है, और उस माउंटेन सिस्टम में मैं इंडिविजुअल रेंजेस को ले रहा हूं, जब ये पूरा माउंटेन सिस्टम ले रहे थे तो इट बिकेम व्हाट, सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म। व्हेन आई एम टेकिंग द इंडिविजुअल रेंजेस ऑफ दैट माउंटेन सिस्टम, इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म, ठीक है। इसी तरह से ग्रेट प्लेन्स का एक एग्जांपल ले लो। तो ग्रेट प्लेन्स में अगर हम देखें तो पार्ट ऑफ दिस ग्रेट प्लेन्स, इफ यू लुक इनटू, दे आर आउटवॉश प्लेन्स मेड बाय ग्लेशियल वाटर मेल्ट। पार्ट ऑफ दीज प्लेन्स आर, उसमें बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, ठीक है। तो मिसिसिपी, मिसोरी, तो उनके इंडिविजुअल प्लेन्स हैं, ठीक है। तो जब मैं इस ग्रेट प्लेन्स को रिवर्स प्लेन्स में डिवाइड कर दे रहा हूं, आई कैन आइडेंटिफाई मेनी रिवर्स एंड देयर प्लेन्स। सो दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट बिकम्स द थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो इंडिविजुअल रिवर्स एंड देयर द प्लेन्स विच आर फॉर्म्ड बाय देम। So these are two examples of third order landforms. Then obviously below this there will be the fourth order. The fourth order landforms, ठीक है। तो जब हम फोर्थ ऑर्डर लैंडफॉर्म की बात कर रहे हैं तो नाउ टेल मी, अगर मैं देखूं तो इन ईच ऑफ दीज माउंटेन रेंजेस कैन आई आइडेंटिफाई सम इंडिविजुअल पीक्स? यस और नो? माउंट मैकिनले, माउंट शास्ता, माउंट लोगान, तो हर इंडिविजुअल माउंटेन में भी आई कैन आइडेंटिफाई सर्टेन पीक्स, ठीक है। जैसे हिमालयस में अगर देखूं तो मैं हिमालयस, एक तो हिमालयन सिस्टम हो गया, अभी हमने देखा था हिमालयन सिस्टम के अंदर 5 माउंटेन रेंजेस हैं, तो दैट वाज थर्ड ऑर्डर। अब मैं अगर देखूं ग्रेट हिमालयस, फॉर एग्जांपल, ग्रेट हिमालयस में हमें बहुत सारी पीक्स मिलती हैं, ठीक है, यू नो वेरी वेल, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो जो इंडिविजुअल पीक्स हो गई वो क्या हो गई, दे बिकम द फोर्थ ऑर्डर लैंडफॉर्म्स, ठीक है। दैट इज एसेंशियली द फोर्थ ऑर्डर लैंडफॉर्म। अगर मैं एग्जांपल दूं, ग्रेट प्लेन्स का हमने क्या देखा था, ग्रेट प्लेन्स को हमने डिवाइड किया इंडिविजुअल रिवर प्लेन्स में, तो रिवर प्लेन्स क्या थे, थर्ड ऑर्डर हो गया था, ठीक है। अब एक रिवर प्लेन को अगर मैं देखूं तो कैन आई से कि उसमें कई चीजें मिलेंगी मुझे, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम लुकिंग इनटू अ रिवर प्लेन, कैन आई फाइंड देयर कैन बी दीज इंडिविजुअल मियांडर्स, ठीक है, ऑक्सबो लेक्स। So when I am looking into such features, they become what? They become fourth order landforms. ठीक है? So they become the fourth order landform. And obviously fourth order landform से भी छोटा, we can look into the fifth order landform.
फिफ्थ ऑर्डर लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो अगर मैं फिफ्थ ऑर्डर लैंडफॉर्म का एग्जांपल दूं तो हमने बोला माउंटेन पीक। ठीक है, तो अगर मैं पीक में भी देखूं तो जनरली बहुत सारी जो पीक्स होंगी वो कुछ इस तरह से बनी होंगी। ठीक है, तो अब इस पीक में कैन आई आइडेंटिफाई दिस इज वन एलिमेंट विच इज वेरी स्टीप, यस और नो? तो उस पीक के इंडिविजुअल स्लोप एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। ठीक है, या फिर इसको सिंपल टर्म्स में बोलूं तो जैसे हिमालयाज है, कैन वी से देयर इज प्रेजेंस ऑफ नॉर्दर्न स्लोप्स एंड सदर्न स्लोप्स। ठीक है, नॉर्दर्न स्लोप सदर्न स्लोप्स को फर्दर डिवाइड कर सकता हूं, सदर्न स्लोप्स को डिवाइड कर दिया, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टीप एलिमेंट, तो हम देखेंगे कि इसको बोलेंगे ग्रेविटी स्लोप। ठीक है, दिस इज जेंटल, व्हाई इट इज जेंटल? बिकॉज एक्चुअली ये डेब्रिस से बना हुआ। ठीक है, so this is basically what it is, a debris slope. ठीक है, so again you can understand that I can further divide it into small slope elements. So study of these small slope elements, it is what? It is the fifth order of the landforms. ठीक है, कि ये इंडिविजुअल स्लोप एलिमेंट्स कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। हमारे सिलेबस में, जियोमॉर्फोलॉजी के सिलेबस में हम देखेंगे there is a topic by the name of slope development. ठीक है, तो यानी कि यूपीएससी हमें फिफ्थ ऑर्डर लैंडफॉर्म्स को पढ़ने के लिए भी बोल रहा है। ठीक है, तो दैट इज एन एग्जांपल। इसी तरह से अगर मैं एक रिवर के अंदर देखूं, ठीक है, तो एक रिवर सपोज ये फ्लो कर रही है, हियर दिस रिवर इज फ्लोइंग, इफ आई लुक फ्रॉम क्रॉस सेक्शन आई कैन फाइंड कि रिवर के अंदर कुछ इस तरह से डिपोजिशन मिलेगा सैंड का। ठीक है, तो कहीं पर डीपर होगा, तो जहां पर डीपर होता है उसको बोलते हैं पूल, जहां पर हायर होता है उसको बोलते हैं रिपल। तो पूल्स एंड रिपल्स दे आर एग्जांपल ऑफ व्हाट? ऑफ फिफ्थ ऑर्डर लैंडफॉर्म। या फिर सपोज अगर मैं बर्ड्स आई व्यू से देखूं तो यहां पर ये रिवर था, वेरी फ्रीक्वेंटली यू कैन फाइंड दैट यहां पर सैंड का डिपोजिशन हो गया जिसको बोलते हैं सैंड बार। ठीक है, so this sandbar is an example of what? It is an example of fifth order landform. या फिर you might have seen many times rivers will begin to braid as sandbars can be deposited in the middle of the river. ठीक है, so again it is what? It is a fifth order landform. ठीक है, so that is what we are talking about landforms. So landforms, they refers to the different features of the earth surface as they present various shapes and sizes. So landforms can be studied at different scales. Why it is very important to recognize the scale of the landforms? Because the scale of the landform will determine how the landform development will take place. ठीक है, so tell me, सपोज मैं फिफ्थ ऑर्डर लैंडफॉर्म की बात कर रहा हूं, वो छोटे से सैंड बार्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, इज इट पॉसिबल कि सपोज करो कि एक दिन ऐसा हुआ कि देयर वाज क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ क्लाउड बर्स्ट व्हाट विल हैपन? विल द रिवर बिकम फ्लडेड एंड विल द रिवर विल हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी? इज इट पॉसिबल दैट इन दैट इवेंट in a single day there can be changes in that sandbar? हो सकता है, तो उसमें जो चेंज हो रहा है, कैन आई से इट कैन टेक प्लेस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? ठीक है, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सपोज फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म, अगर इसमें चेंज होना होगा तो विल इट रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर्स? सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल होती है, you know about Pangea, how Pangea formed, it got dissociated, so it would take millions of years.
सेकेंड ऑर्डर हिमालयन सिस्टम, पूरा हिमालयन सिस्टम बनने में द एंटायर, इफ यू टॉक अबाउट सिनोजोइक पीरियड वाज इन्वॉल्व। ठीक है, देखेंगे अभी टाइम पीरियड के बारे में। तो अगेन इफ यू टॉक अबाउट इट इज सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स, दे विल टेक कंपैरेटिवली लेस टाइम देन फर्स्ट ऑर्डर, बट स्टिल दे विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। ठीक है, अगर मैं हिमालयस के इंडिविजुअल रेंजेस बनने की बात करूं थर्ड ऑर्डर, तो एक इंडिविजुअल रेंज बनने में 2 से 5 मिलियन साल लगे। ठीक है, फॉर देम टू बी फॉर्म्ड। सो चेंजेस इन देम विल बी व्हाट, इट विल बी अगेन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल पीक्स, कैन आई से इंडिविजुअल पीक में चेंजेस हो सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मैंने यहां पर इंडिविजुअल पीक का डायग्राम बनाया था, इट इज पॉसिबल दैट, टेल मी, अगर तुमने देखा होगा तो माउंट एवरेस्ट की फोटो कुछ कुछ ऐसी दिखती है। हैव यू सीन दैट? व्हाई? बिकॉज ग्लेशियर्स हैव इरोडेड एंड मेड इट लाइक दिस पिरामिडल पीक, इसको देखेंगे बाद में बोलते। ठीक है, सो अगेन इट वुडंट हैव टेकन so much time as millions of years, but can I say इसमें thousands of years तो लगे होंगे इस काम को accomplish होने में भी। So again when we are talking about fourth order landform, there is a different time scale which is involved. When I am talking about very small scale landforms, in them the changes can take place in just few days to few years. ठीक है, so दोनों को कहने का मतलब है कि अगर मैं स्केल को समझता हूं तो then what will happen? Understanding them, studying them will require a different perspective. ठीक है, so अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं, जो हमने बात की इसी तरह से जैसे अभी हमने बात किया, spatial scale, there is also what? There is temporal scale in geomorphology. ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स होंगे, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, दे टेक सेवरल चेंजेस इन देम कैन बी accomplished only over several cyclic times. ठीक है, several cyclic time उसमें लग जाएंगे। साइक्लिक टाइम क्या होता है? इट इज अ पीरियड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, इन विच इन्वॉल्व्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, सेकेंड और थर्ड ऑर्डर में जो चेंजेस होते हैं, दे आर अकम्प्लिश्ड ओवर साइक्लिक टाइम पीरियड। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर में जो चेंजेस होते हैं, इसको बोलते हैं दे आर अकम्प्लिश्ड ओवर डायनेमिक या फिर ग्रेडेड टाइम। ठीक है, तो डायनेमिक या ग्रेडेड टाइम कैन बी थाउजेंड्स, 100 to thousands ऑफ ईयर्स। एंड देयर इज temporal scale of steady time. Steady time in general is what? Few to 100 years. ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट स्केल टाइम स्केल है। डू यू गेट माई पॉइंट?
So depending upon the size, the time involved in bringing change in that landform will also can be categorized. तो 3 टाइम स्केल हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, साइक्लिक टाइम, ग्रेडेड टाइम एंड स्टेडी टाइम. ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ. अब यहां पर एक चीज समझने की कोशिश है करते हैं. हमने अभी देखा था कि जियोमॉर्फोलॉजी अपने फर्स्ट फेज में व्हाट इट वाज मोर इरैशनल. ठीक है, इट वाज नॉट सो मच रैशनल. व्हाट कुड बी द रीजन व्हाई दिस इरेशनैलिटी? Because we could not understand, appreciate these skills at that time. ठीक है, अगर मैं देखूं तो एक एवरेज ह्यूमन की लाइफ जो होती है, कैन वी से वी कैन कॉल इट एज विद इन स्टडी टाइम? यस और नो? वी कैन कॉल इट विद इन द स्टडी टाइम. ठीक है, और अगर ऐसा है तो पीपल इन द पास्ट दे डिड नॉट नो कि अर्थ की हिस्ट्री कैन बी एज ओल्ड एज व्हाट इज द एज ऑफ द अर्थ? 4.5 बिलियन ईयर्स. ठीक है, सो दे कुडंट इमेजिन दैट द अर्थ कैन बी सो मच ओल्ड. कैन यू अंडरस्टैंड? हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतना ओल्ड है. And we used to think the earth from perspective of our time, our lifetimes. ठीक है, so it was very difficult for the people of the past to imagine कि इतने बड़े माउंटेन्स हैं वो कैसे बने होंगे, इतने बड़े ओशन बेसिन्स कैसे बने होंगे. ठीक है, they couldn't imagine. ठीक है, and thus to explain these huge features, these huge scale landforms, what they had to do? They had to resort to, they thought that there must some kind of special processes would have led to their formation. ठीक है, so they would have thought that some kind of special processes would have led to their formation. अब ये स्पेशल प्रोसेसेस यू कैन अंडरस्टैंड, these special processes were earlier, the special process was God. ठीक है, सो यू नो कि गंगा रिवर ओरिजिनेट्स कहां से ओरिजिनेट होती है? शिव जी की जटा से निकलती है. ठीक है, सो इट वॉज मोर एसोसिएटेड विथ व्हाट? सच काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम्स. यू नो कि यूरोप में by the end of the dark ages, as the medieval period ended, there was beginning of Renaissance, and Renaissance was based upon what? Rationality पर based था पूरी तरह से. So then what happened? This gave way to more rational features. ठीक है, so it gave way to certain catastrophic processes, certain type of catastrophic processes. So अगर मुझे ओशन बेसिन का फॉर्मेशन समझाना है, कैन आई से कि मैं ये कह सकता हूं कि एक मीटियोराइट इंपैक्ट हुआ और उस मीटियोराइट इंपैक्ट से एक बड़ा सा क्रेटर बन गया और उस क्रेटर में पानी भर गया, उससे ओशन बन गया. ठीक है, तो अगेन बिकॉज वी कुडंट इमेजिन टिल दैट टाइम कि अर्थ की हिस्ट्री इतनी बड़ी हो सकती है, इतनी लंबी हो सकती है. ठीक है, तो वी रिसोर्टेड टू व्हाट? कैटास्ट्रॉफिक प्रोसेसेस. तो इनिशियली जब जियोमॉर्फोलॉजी डेवलप हुआ तो द अप्रोच विच वाज देयर इन जियोमॉर्फोलॉजी, दिस अप्रोच केम टू बी नोन एज कैटास्ट्रॉफिज्म. कैटास्ट्रॉफिज्म.
So what is the approach of catastrophism? लिख लो इसको. Catastrophism is an approach. Catastrophism is an approach within geology and geomorphology which believes that the landforms on the Earth's surface have been formed by some special processes, particularly the catastrophic processes. Catastrophic processes like meteorite impacts, earthquakes, volcanism, etc. ठीक है. So this is referred to as catastrophism philosophy. ठीक है. अब अगर मैं माउंटेन्स में जाऊं, ठीक है, तो मुझे दिखाई पड़ता है कि माउंटेन्स के कुछ शेप्स ऐसे करके होता है. यस और नो? इस तरह के दिखाई पड़ते हैं माउंटेन्स. तो डू वी फाइंड दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ वैलीज इन द माउंटेन्स? अर्लियर पीपल कुड नॉट इमेजिन कि ये वैली कैसे बना होगा. There is a river found at the bottom of this valley, and this river was doing what? It was cutting down the rocks. ठीक है. So earlier people could not imagine. अगर मैं अभी देखूं जाकर के किसी रिवर में, तो एक किसी टाइम में रिवर कितना ज्यादा इरोजन कर रही होगी, थोड़ा बहुत. एंड पीपल कुड नॉट इमेजिन कि एक रिवर इतनी बड़ी बड़ी इतनी डीप वैलीज बना सकती, बिकॉज they did not know the actual history of the earth, that it can be so much long. So that same small change which was being done by a river on daily basis, if you account it for thousands of years, lakhs of years and millions of years, then what will happen? It will essentially account for formation of such large landforms. ठीक है. So thus what we find, the formation of the modern geomorphology, the modern scientific geomorphology, it started from 1785. ठीक है. And in 1785 a person by the name of James Hutton he challenged the principle of catastrophism. Okay, so what he did, he challenged the principle of catastrophism. ठीक है. And he presented his own, we call it as the principle of uniformitarianism. Principle of uniformitarianism. ठीक है. तो ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म क्या कहता है? Hutton wrote that there is no
vestige of a beginning and no prospect of an end. No vestige of a beginning and no prospect of an end. ठीक है, इसको मैं समझाता हूं. दिस आइडिया इज द आइडिया ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेट. ठीक है, या फिर इसको एक और टर्म से बुलाते हैं हम, कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअलिज्म. प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअलिज्म. ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको लिख लो. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ सरफेस इज फॉर्म्ड. Majority of the earth's surface is formed by slowly and gradually operating geomorphic processes. Slowly and gradually operating geomorphic processes. ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या वर्ड्स यूज किए हैं, मेजॉरिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मेजॉरिटी? मेजॉरिटी का मतलब एवरीथिंग नहीं है, नॉट एवरीथिंग. ठीक है, दैट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द थिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, most of the surface is result of such gradually operating processes. It also means that there can be some parts which can be result of catastrophism. ठीक है, so it doesn't denies catastrophism. It says that majority is actually dependent upon or formed by these slowly operating processes. ठीक है, so this is essentially referred to as the principle of gradualism, which is part and parcel of principle of uniformitarianism. I hope it is clear. ठीक है, इसके अलावा ये क्या कहता है, principle of uniformitarianism also says that present is key to the past. Present is key to the past. ठीक है, तो देखो ये जो आइडिया है प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, इसमें दो प्रिंसिपल्स आते हैं. ठीक है, व्हाट आर दोस प्रिंसिपल्स? वन इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ एंड सेकंड इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसेस. यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसेस. तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ क्या कहता है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स, देख लो इसको, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट नेचुरल लॉज आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल इन स्पेस एंड टाइम. Natural laws are universally applicable in space and time. ठीक है, so think about this. अगर there is a natural law which we talk about is the law of gravity. ठीक है, so if I drop this pen, where it will go? It will go down. ठीक है, this is a law. Can I say there should be uniformity in space and time, universality? तो अगर मैं अमेरिका में जाऊं और वहां पर इस पेन को ड्रॉप करूं, वेयर इट विल गो? इट विल गो डाउन.
if I go in the period of Ramayana and drop this pen, again where it will go? It will go down. ठीक है? So again this is what? This is uniformity of law. Uniformity of process क्या कहता है? ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, आ गया था ग्रेविटेशन, न्यूटन का लॉ तब तक आ चुका था. ठीक है, ओके. यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसेस, इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसेस, इसमें लिख लो. इट स्टेट्स दैट when a phenomena can be explained by the presently known processes comma, there is no need to invoke unnecessary reasons to explain the phenomena. Unnecessary reasons to explain the phenomena. ठीक है, इसको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो we know that the Ganga river originates from glacier. So presently we know that it originates from glacier. Then why we have to say that in the past it originated from Jata of Shivji? It is what? It is unnecessary explanation. If you look into Ram Setu, we know basically that it is a coral bridge. Okay? So why we have to say that in the past it was formed by Ramji throwing stones in the river? Okay? So if a phenomena can be explained by the presently known processes, okay, there is no need to invoke unnecessary explanations. So this is the uniformity of process. And thus, if you want to understand the past and predict future, what you need to do? You need to study the present. What processes are operating in the present? They would have also operated in the past. They would also operate in the future because there is uniformity of law. And thus there is present is key to the past. If you want to understand the past, look at the present. I hope you get my point. So all these together, they are referred to as the principle of uniformitarianism. ठीक है, तो अगर मैं जनरली एक इसके बारे में एक सिंपल लाइन लिखूं, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म. ठीक है, वो तो कंपोनेंट्स थे प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म के जो अभी तक हमने समझे और लिखे. ठीक है, सो इसमें लिखो द सेम फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, the same physical and biological processes which are operating today also operated in the past, comma, although not necessarily with the same intensity as now. ठीक है, so that is basically what, that is the प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म. समझ में आ गई बात? तो जब प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म बेस बन गया तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से हम जियोमॉर्फोलॉजी को साइंटिफिक बना सकते हैं? साइंस क्या है? साइंस इज अ स्टडी विच इज बेस्ड अपॉन एविडेंस. ठीक है,
which is based upon empirical studies, empirical observations. साइंस कहता है जो दिखता है वही सच है, ठीक है, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ साइंस. What you cannot prove, that is not true according to science. So once you are believing that what we see today in the present, that is to be only taken as the truth, that is to be only taken as the real, and you are explaining the past and even trying to predict the future on the basis of that, on the basis of the processes which you see today, essentially this is basically what it will make geomorphology science. ठीक है. तो अगर मैं बोलूं कि आज अगर हम देखें तो रिवर्स क्या कर रही हैं, इफ यू लुक इनटू द रिवर्स, हम देखेंगे रिवर्स परफॉर्म 3 processes. They perform erosion, which is breaking down of the rocks. They perform transportation, and they perform deposition. ठीक है, रिवर्स ये 3 काम कर रही हैं. And through erosion, can we say thus that the rivers would have essentially formed the V-shaped valley? Yes or no? क्योंकि आज हम देख रहे हैं, हम पूरी V-shaped valley के फॉर्मेशन को तो देख नहीं सकते, बिकॉज इट वुड हैव टेकन thousands, even lakhs of years for that river valley to be formed. ठीक है, but still we see that today the river is doing erosion, and this impact of erosion, if we combine, जो एक दिन का erosion है उसको मैं thousands of years में translate करूं, तो can I say we can imagine a big deep river valley. ठीक है, so again we are using what? We are using principle of uniformitarianism. I hope it is clear. ठीक है, then if you talk about comes the deposition, तो हम देख रहे हैं आज रिवर क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है बहुत सारा मटेरियल, कई तरीके से ट्रांसपोर्ट करती है. हम देखेंगे रिवर बेड लोड साथ में ड्रैग करती है, सस्पेंडेड लोड रिवर में जाता है, सॉल्युबल लोड रिवर में जाता है. तो जब रिवर में एनर्जी कम हो जाएगी तो वो क्या कर पाएगी, लोड कम कर, ट्रांसपोर्ट कम कर पाएगी, एंड इट विल डिपॉजिट. तो कैन आई से कि जो डेल्टा या एलुवियल फैंस जो फॉर्म हो रहे हैं, आज की डेट में हमें सुंदरबन डेल्टा इतना बड़ा लैंडफॉर्म दिखाई पड़ रहा है, कैन आई से इट वुड हैव बीन फॉर्म्ड इन द सेम फैशन. ठीक है, so when I start looking in geomorphology from the perspective of the present operating processes only, can I say that geomorphology will essentially become scientific? I hope it is clear. So with the development of uniformitarianism, what we find that geomorphology began to become scientific. ठीक है, this idea of this idea of uniformitarianism was presented by James Hutton, but he wrote in a very difficult language. ठीक है, German language, and it was translated by his friend John Playfair. He translated his work in very simple language. ठीक है, so this is the idea of principle of uniformitarianism. ठीक है, देखो, so आज की क्लास, because there is another class at 11, so I'll just conclude for today. We'll continue this tomorrow. Now
what I just want to re-emphasize here is very simple कि जो हमारी क्लास का टाइमिंग होगा वो लगभग 2.5 आवर्स टू 3 आवर्स का टाइमिंग होगा एवरेज, ठीक है। तो मुझे दिन में ये टाइम प्लस 1.5 आवर्स रिवीजन, ठीक है। तो लगभग मुझे कितना टाइम देना है, लगभग मुझे 4-4.5 घंटे का टाइम देना है। Why I am saying only this much you have to revise from today's class, you would have understood कि जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उसके बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इट विल नॉट बी लाइक अदर प्लेसेस वेयर टीचर्स रिकमेंड, टीचर्स अपना खुद का काम नहीं करते एंड दे विल रिकमेंड यू कि जा करके सविंदर सिंह जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लो, ठीक है। उनसे पूछो कि सर आपने पढ़ी थी, 500 पेज कम से कम अगर पढ़ने बैठे तो उसमें से कम 500 पेज सिलेबस से रिलेटेड पेजेस निकल जाएंगे, ठीक है। और कैन यू इमेजिन 500 पेजेस को पढ़ना, कंपाइल करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अ स्टूडेंट। उसको आधी बातें तो समझ में नहीं आएंगी पहली बार। इट इज नॉट द टास्क ऑफ द स्टूडेंट, यू हैव टू डू दैट। आई बीइंग अ टीचर आई हैव टू डू दैट। तुम्हारा काम कहां पर है, तुम्हारा काम है उसको रट्टा मारना, ठीक है। दैट इज योर टास्क। Writing answers, solving PYQs, that is your task, ठीक है। So that is what you have to give. So you can see that when I am teaching, I go into very deep levels and understanding will not be a major issue. अगर understanding में issue आता भी है तो my advice is always initial days में क्या करो, just try to memorize. As you begin to remember things, you will see कि चीजें समझ में भी आने लगेंगी, ठीक है। And the thing is, the first thing that we said, 18 months है हमारे पास 2025 वालों के लिए, और अगर अभी शुरू करते हैं तो we will definitely do at least complete the course and you will be able to do at least 3 revisions, very solid revisions before prelims. और जो इस लेवल पे पहुंच जाता है, वेरी गुड लेवल ऑफ प्रिपरेशन, गाइडेंस का कंटेंट विथ कंसोलिडेशन, कोई रोक नहीं सकता यूपीएससी के अंदर, ठीक है। सो विद दैट आई विल स्टॉप द क्लास फॉर टुडे। समर्स में जैसे जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर इंप्रूव होगा, आई विल ब्रिंग द टाइम टू 8, ठीक है। अभी थोड़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, सुबह उठ करके शावर लेना, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट हरकुलियन टास्क, ठीक है। एंड देर इज़ अ सेमिनार फॉर जीएस क्लास एट 11, so those of you who want to attend, please attend. आज मैं ही आई विल डिस्कस। हियर गौरव हैज आस्क्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बार बार एक वर्ड यूज करता हूं, यू हैव टू कंसोलिडेट, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है 2 चीजें, एक यू हैव memorized the content, and second you have also developed the ability to use it, ठीक है। दिस इज कंसोलिडेशन। एंड ये कैसे अचीव होता है, ये अचीव होता है रिवीजन से, एंड ये अचीव होता है बाय सॉल्विंग PYQs एंड टेस्ट। This is what we call it as, I mean by the term consolidation, ठीक है। Okay, goodbye, take care, we'll meet tomorrow same time 8:30. The class will continue on YouTube.